Welcome to Brilliant Mathematics Academy. In the last video, we have learned about quadratic equations and we have learned about how to solve a quadratic equation by factorization method. और इस वीडियो में हम लोग देखते हैं quadratic equations कैसे फॉर्म कर रहा है from the given roots. The formula to obtain the quadratic equation from the given roots is x square minus alpha plus beta x plus अल्फा बीटा इज इक्वल टू जीरो। ये फॉर्मूला यूज कर कर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कर रहा है। सो लेट्स स्टार्ट द प्रैक्टिस सेट। प्रैक्टिस सेट 2.5 क्वेश्चन 4। प्रैक्टिस सेट एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 4। The roots given are 0 and 4. फर्स्ट वन द रूट्स गिवन आर 0 and 4। तो हमको 0 और 4 ये दो रूट्स गिवन है। हमको ये रूट्स यूज कर कर ये फॉर्मूला यूज करना है और हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रिपेयर करना है। तो कैसा हम लोग करेंगे? फर्स्ट इज व्हाट? अल्फा प्लस बीटा। नाउ अल्फा इज 0, beta is 4. Here alpha is 0, beta is 4. So let's find first these values. Alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 0 plus 4 equal to 4. And what is next is product is there. Alpha beta. Alpha beta. Alpha beta का multiplication है. Alpha is 0 and the beta is 4. So 0 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू 0। ये वैल्यूज हमको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा ये वैल्यूज हमको इक्वेशन में इनपुट करना है। ये वाला इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फ्रॉम द गिवन रूट्स द इक्वेशन इज x स्क्वायर माइनस alpha plus beta x plus alpha beta is equal to 0. Now what is the value for alpha plus beta? It's 4. So x square minus 4x। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना है? 0 है, प्लस 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 0 इक्वल टू 0 एंड द फाइनल इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर माइनस 4x इज इक्वल टू 0। ओके, इस तरह आपको ये फॉर्मूला यूज करके आपको दो गिवन रूट्स रहते हैं अल्फा और बीटा। आपको सिर्फ वैल्यूज इनपुट करके फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको फाइंड करना है। तो लेट्स सॉल्व सेकंड प्रॉब्लम। व्हाट आर द सेकंड रूट्स गिवन? व्हाट आर द सेकंड रूट्स गिवन? द सेकंड रूट्स आर 3 and minus 10. The second roots are 3 and minus 10. Second roots are 3 and minus 10. What is the value? Alpha plus alpha is equal to 3 and बीटा इज इक्वल टू माइनस 10। अल्फा का वैल्यू 3 है और बीटा का वैल्यू माइनस 10 है। तो लेट्स फाइंड these values first. Alpha plus beta. Alpha plus beta is equal to 3 plus minus 10 which is equal to 3 minus 10 plus minus minus 3 minus 10 is 10 minus 3 7 and you have to give the sign of bigger number. The bigger number is 10 and the sign of bigger number is minus. So put here minus sign. The answer is minus 7. What is the value for alpha beta? Alpha beta का value 3 multiplied by minus 10. 3 multiplied by minus 10 which comes to minus 30. The value of alpha and beta is 3 multiplied by minus 10 is minus 30. Now let's solve this equation. General form of quadratic equation to obtain from the roots is x square minus
is x square minus, what is the value for alpha plus beta? The value for alpha plus beta is minus 7. X square minus 7 plus alpha beta. X square minus 7x plus, what is the value for alpha beta? It's minus 30. Minus 30 is equal to 0. So the final equation is x square plus 7x minus 30 is equal to 0. The final equation is x square plus 7x minus 30 is equal to 0. Let's solve second problem. The third problem is in question number 4 of exercise 2.5. It is 1 upon 2 and minus 1 upon 2. The third problem is 1 upon 2 and minus 1 upon 2. Now here again the value for alpha is 1 upon 2. The value for beta is minus 1 upon 2. 1 upon 2 and minus 1 upon 2. These are the two roots given. So the value for alpha is 1 upon 2. And the value for beta is minus 1 upon 2. So let's find first alpha plus beta. Alpha plus beta, which is equal to 1 upon 2 plus minus 1 upon 2, which is equal to plus minus 1 upon 2 minus 1 upon 2, which is equal to 0. So this value comes to 0. Now let's find the second value, which is alpha beta product. The product of alpha beta, which is equal to 1 upon 2 multiplied by minus 1 upon 2 minus 1 upon 4. अब सिर्फ ये वैल्यू हमको इनपुट करना है इस इक्वेशन में. To obtain the quadratic equation from the given rules, what is the equation? X square minus alpha plus beta, the value comes to 0. Minus 0 x plus minus 1 upon 4 is equal to 0. So the final equation is x square plus minus 0 multiplied by x is 0, and here plus minus x square minus 1 upon 4 equal to 0. So like this way you have to find the quadratic equation from the given rules. Thank you.